Good morning students, welcome back to our EVS class. I hope you all are doing good. So let us start our class. In the previous class, we learned why does light and heat reaching a region vary in summer and winter. Today we will learn why do seasons change. Seasons क्यों change होते हैं? As we all know that the earth revolves around the sun in its orbit. जैसा कि हम जानते हैं अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इन इट्स ऑर्बिट, उसकी ऑर्बिट में. सो व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्बिट? एन ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ऑर्बिट क्या है? एक फिक्स्ड पाथ है जिस पर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी. ओके, एंड द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. और अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पर टिल्टेड है. ओके, टिल्टेड मींस नॉट स्ट्रेट एंड मूविंग इन अ स्लोपिंग पोजीशन. ओके, सो व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, the tilt will be in the same direction and its position keeps changing. और जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो जो ये टिल्ट होता है इसका डायरेक्शन में क्या होता है? सेम डायरेक्शन होता है. ओके, एंड इट्स पोजीशन कीप्स चेंजिंग. और ये अर्थ की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती जाती है. ओके, सो थ्रू आउट द ईयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द सन. इसलिए पूरी ईयर जो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सन के साइड होते हैं. इन 6 months the earth travel to the opposite side. और 6 month में कहाँ ट्रेवल करती है? जस्ट opposite side. Okay, so seasons are caused because the earth revolves around the sun with a tilt on same side. सीजन्स क्यों कॉज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज अर्थ क्या कर रही है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है विद अ टिल्ट इन द सेम डायरेक्शन. क्योंकि इसमें क्या है? टिल्ट है जो सेम डायरेक्शन में एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, सो हाउ मेनी सीजन्स वी हैव इन इंडिया? वी हैव 3 main seasons in India: summer season, monsoon or rainy season, and winter season. Okay, so when the earth revolves around the sun, one half of the earth is slightly closer to the sun and has summer. जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो जो उसका वन हाफ होता है, अपर हाफ होता है, वो सन के स्लाइटली क्लोज होता है एंड हैज समर. और वहाँ क्या होती है? समर होती है. ओके, ड्यूरिंग द सेम टाइम the other half of the earth is slightly away from the sun and has winter. इसी टाइम में, सेम टाइम में जो अर्थ का अदर हाफ होता है, लोअर हाफ होता है, वो सन से क्या होता है? थोड़ा दूर होता है. That's why it has winter. इसलिए वहाँ पे क्या होती है? विंटर होती है. ओके, now by December the earth has completed half of its revolution. और दिसंबर तक अर्थ क्या करती है? अपना हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है. ओके, सो दैट दिस टाइम द अपर हाफ इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सन एंड हैज विंटर. दिस टाइम में क्या होता है? जो अर्थ का वन हाफ होता है, अपर हाफ होता है, वो सन से थोड़ा दूर होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? विंटर. एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम द लोअर हाफ इज स्लाइटली क्लोजर टू द सन and has summer. और जो उसका अदर हाफ होता है, लोअर हाफ होता है, वो सन से क्लोज होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? समर होती है. ओके, सो द अर्थ हैज सीजन्स बिकॉज इट remains tilted on its axis as it moves around the sun. ओके, सो अर्थ में सीजन क्यों होती है? बिकॉज अर्थ के अपने एक्सिस पर tilted है as it moves around the sun. जब ये सन के अराउंड मूव करिए तब भी. ओके, सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन. व्हाई डू सीजन्स चेंज? व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, half of the earth upper half
is closer to the sun and has summer, and the other half is slightly away from the sun and has winter. Okay, so seasons are caused because the earth revolves around the sun with a tilt on the same side. So seasons क्यों cause होते हैं? Because अर्थ क्या कर रही है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है with a tilt the same side. क्यों? क्योंकि उसमें tilt है वो भी same side में मूव करता है. Okay, I hope students you understood this topic. That's all for today's class. Thank you.